today's discussion. I started recording. I will try to go straight from 3 p.m. to 5:40 p.m. if my energy allows me. Otherwise, I will have a break as programmed before. So 3 to 3:50 and then 4:10 to 5. We started talking about the second chapter, and I will discuss some of the ideas again and go through some examples. And those examples, in fact, not only beneficial for our understanding of the concepts that we are building up, but also that makes the bulk of the material, I mean, the examples that we are going to discuss that make up the bulk of the material uh, that will allow me to make questions uh, for examinations, whether it is quiz, assignment, or the final examination. So you may say that from today it's more serious a business about understanding the concepts in the real analysis. We discussed open sets last time, and we define open set to be a set which has certain properties for which we developed some definitions first. The neighborhood idea was extended. Previously, we just considered neighborhood of a point A to be A minus delta, A plus delta, yeah, A minus H, A plus H. But now we say that any set N, which is a subset of set of real numbers, is a neighborhood of the point A if there exists an open interval I such that A belongs to I. So how this definition is different from our previous definition of neighborhood? Uh, we have a point which is contained in an open interval. Where it is contained, it may be contained in an open interval I anywhere between the left hand point and the right hand point, not necessarily in the middle. And that in open interval is a subset of a larger set N. So that larger set N is the neighborhood of the point A. So we describe this in further detail, but a common practice is that uh, as previously we defined a neighborhood of a point A with radius delta as the open interval A minus delta to A plus delta that is shown in this figure. And we also write this as this set because all points between A minus delta and A plus delta are at a distance from A at most delta, not equal to delta even. So this is our initial or elementary concept of neighborhood, and now we are extended the concept of neighborhood further. And here the things that are important uh, for our discussion. First of all, look at the set of real numbers, the whole set of real number. And we say that the whole set of real number is neighborhood of each of its point. So you think of the real line, pick up any point on the real line, and you will find an open interval that contains the point x, and that open interval is a subset of R. So R is the neighborhood of each of its point. Now let us think about a set of rational or irrational number. So set of rational numbers is not a neighborhood of any of its point.
And this is where we see the difference between the idea when a set is a neighborhood and when a set is not a neighborhood. Set of real number is neighborhood of each of its points because every point you think about in the set of real numbers, you will find an open interval containing that point x, and that open interval is completely a subset of the set of real numbers. While in case of rational numbers, or for that matter, irrational numbers, you consider any point in the set of rational numbers, and when you consider a neighborhood of q, a rational number, that neighborhood will contain rational numbers, but that will also contain irrational numbers. So you cannot say that the interval IQ, which is an open interval containing Q, is a subset of Q. So this is true for every rational number Q. You take a neighborhood of that number, and that neighborhood is not a subset of set of rational numbers because every neighborhood of every rational number will contain non-rational numbers that are irrational numbers. Same is the case. I can rewrite this line for set of irrational numbers. So set of real number is a neighborhood of each of its point, but set of rational number is not a neighborhood of any of its point. Same is true for the set of irrational numbers. You consider any open interval, and that open interval is a neighborhood of each of its point. You consider, for example, 2, 3, open interval. So any point between 2 and 3 is an element of this open interval. And you think about any point between 2 and 3, and you can find a neighborhood or an open interval that contains a point. For example, 2 से 3 मैं एक point लेता हूँ 2.99. I can find a neighborhood of 2.99 so that open interval of 2.99 is completely a subset of this, and that open interval can be made using uh, very small delta or h, so that 2.99 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस है उससे भी छोटा आप डेल्टा ले लें जिससे कि आप ओपन इंटरवल आई बनाएं. Closed set and closed set is the neighborhood of every of its point that is inside A and B, but it is not neighborhood of the end points. क्योंकि end point A हो या B हो, इसका अगर आप फॉर एग्जाम्पल ए का आप पे कोई भी इंटरवल मान लीजिए ओपन इंटरवल, एंड पार्ट ऑफ दैट ओपन इंटरवल विल बी आउटसाइड द इंटरवल ए बी. इसी तरह अगर बी एक का नेबरहुड कोई लेंगे तो बी प्लस डेल्टा जो है दैट विल बी आउटसाइड द इंटरवल. सो किसी भी क्लोज इंटरवल का हर पॉइंट क्लोज इंटरवल खुद उसका नेबरहुड है सिवाय एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. It's an interesting statement that the null set is the neighborhood of its points. The null set doesn't contain any point. So when do we when we say that the null set is neighborhood of its all of its points, this is in the sense that there is none other point in this null set which is not for which the null set is not a neighborhood of that point. In that sense, the null set is neighborhood of all of its points. Look at this finite set. This cannot be a neighborhood of any of its points. For example, मैं इसमें से 4 चूज करता हूँ और 4 का पे एक इंटरवल बनाता हूँ 4 minus h 4 plus h. If anybody is asking any question, he's welcome. If there is something else going on, please stop that. So look at this finite set, and I consider a point 4. Let us see that this set is a neighborhood of point this number 4 or not. तो पहले आपको 4 का एक इंटरवल 4 के इर्द गिर्द आपको एक ओपन इंटरवल बनाना है, और हम आमतौर पे 4 माइनस एच और 4 प्लस एच यानी सिमेट्रिक इंटरवल ही बनाएंगे. जैसे कि नेबरहुड की डेफिनेशन में हमने कहा था कि ये जो इंटरवल है इसमें 4 कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस जब भी हम
एक नेबरहुड कंसीडर करेंगे, उसके अंदर एक ओपन इंटरवल लेंगे, तो किसी पॉइंट के लिए वो ओपन इंटरवल सिमेट्रिक ही लेंगे। ना 4 का एक के गिर्द एक ओपन इंटरवल 4 माइनस एच 4 प्लस एच है। एच कैन बी वेरी स्मॉल, लेस देन 1. So 4 minus half and 4 plus half is the open set that contains 4, but that open set I4 is not a subset of this. So S cannot be a neighborhood of any of its points. So we conclude that a finite set is not a neighborhood of any of its points. Let us consider this interesting set. मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये. This is not a neighborhood of any of its points. आप चाहे 1/1 billion कंसिडर कर लें, 1/1 trillion कंसिडर कर लें, 1/1 trillion of trillion, and you can still find an open interval containing that very tiny point, and that open interval may not be subset, will not be subset of this set. So this set is not neighborhood of any of its point. Now I can take example and write down a few numbers, and you can play with those numbers and show that इसमें से इस सेट के एलिमेंट में से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका ओपन इंटरवल जो है इस सेट का सबसेट हो। वैसे भी चूंकि ये डिस्क्रीट सेट है, देयर विल बी गैप्स एवरीवेयर, लेकिन जैसे ही तुम ओपन इंटरवल बनाओगे किसी भी पॉइंट का, तो वो सिर्फ इस सेट के पॉइंट अगर उसमें हों भी, तो उसके अलावा बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जो इस सेट के मेंबर नहीं है और वो इंटरवल में आएंगे. सो दैट इंटरवल विल नॉट बी कंटेन और सबसेट ऑफ द सेट एस, सो none of the points can be. Same is the case with this set. 0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, and so on and so on. It is also so we come to conclusion that कि मेरे पास एक finite set हो तो उसका भी that will not be a neighborhood of any of its points. अगर मेरे पास एक discrete set हो, चाहे वो infinite हो, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये it's not neighborhood of any of its points. Uh, if a set S is a neighborhood of a point that is contained in X, then a set M is also neighborhood of X, given that N is a subset of M. यानी अगर आपके पास एक point X का neighborhood N है, which is itself a subset of a larger set M, यानी superset, तो अगर N किसी point का neighborhood है, तो N का हर superset जो है वो भी point X का neighborhood होगा. This is something that we can formally prove, but here we are just considering this as an interesting point, an example. The union of the neighborhoods of a point X is also a neighborhood of the point, and we can prove that. And here I consider example in the name of the theorem that M and N are neighborhoods of a point, then M intersection N is also a neighborhood of a point. I don't remember that I discussed this theorem and its proof last time or not, but here we are considering a formal proof. अगर सेट M neighborhood है किसी पॉइंट X का, तो एक इंटरवल होगा Ix जो कि कंप्लीटली सबसेट होगा M का, एंड Ix कैन बी रिटन एज दिस. अगर N भी उसी पॉइंट का नेबरहुड है, तो एक और ओपन इंटरवल होगा जो कि सबसेट होगा N का, और वो ओपन इंटरवल जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है. नोट दैट के पहले वाले केस में हमने ओपन इंटरवल बनाने के लिए H1 इस्तेमाल किया और दूसरे वाले केस में H2 इस्तेमाल किया. ना है ये ओपन इंटरवल्स containing same point X. So अब इसमें से एक जो है छोटा होगा, यानी ये ओपन इंटरवल का साइज एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हम कहते हैं अच्छा भाई इन दोनों में से जो छोटा है उसको हम स्मॉल एच कहते हैं, और एक्स का एक इंटरवल लिखते हैं ओपन इंटरवल एक्स की गिर्द ऐसा. ये अब सेट एन में भी होगा और सेट एम में भी होगा. Now, yes, somebody just put up some lines on the screen that I'm sharing.
I want to learn that trick how to put an arbitrary line on the screen being shared. So जिसने भी किया Sir, था I did that, but I don't know कि मैंने कैसे किया. I think I accidentally clicked something. I'm sorry. अच्छा. So ये if it ऐसे was बोल रहे हैं आप इस तरह? हाँ हाँ हाँ, ये लाल लाइन आई ना, जी 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 कैसे आई? ये कैसे आई? सर सर हमारे पास ऊपर ऑप्शन होता है व्यू ऑप्शंस का। व्यू ऑप्शंस में जूम रेशियो, रिक्वेस्ट टू रिमोट कंट्रोल और एनोट आता है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन अच्छा, एनोट तो इस तरह की वी हैव द ऑप्शन। ओह हो, ये आ गया मेरे पास, right. जी 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 So I can also use this for highlighting few things, huh? यस सर। हाँ, okay. So इसको remove कैसे करते हैं? Eraser. सर क्लियर 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 या इरेजर कुछ भी। हाँ, ठीक है, सही, that's nice. चलो अच्छा है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे कि एक ही पॉइंट का नेबरहुड एम भी है और एन भी है। तो एक ही पॉइंट के हमने ओपन इंटरवल लिए, एक ओपन इंटरवल जो एम का सबसेट है और एक ओपन इंटरवल जो एन का सबसेट है तो सेम पॉइंट का ओपन इंटरवल कंटेनिंग सेम एक्स। तो दोनों ओपन इंटरवल्स के सिर्फ साइज डिफरेंट होंगे, और इनमें जो स्मॉलर साइज है वो अगर हम सेलेक्ट कर लें, तो अब ये जो इंटरवल बनेगा ओपन इंटरवल, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ n as well as subset of m. That means this open interval is common to both n and m. Uh, so Ix is a subset of m intersection n. So m intersection n is also a neighborhood of x. Uh, we have mentioned the idea of deleted neighborhood. Uh, So can you show this proof by drawing? Like, oh, acha. Let me try. Let me try. Can you see this white screen? yes, yes. यस सर। Okay, let me draw a line. There is a set on the line n. ये मेरा पेन जो है वो गड़बड़ कर रहा है. It has got some independence somehow. मैं ये वाली स्क्रीन बंद करके कुछ और खोलता हूँ. ये तो वही खुल गई. Now, so this is a smaller set, and this from here to here is the larger set. This is a smaller set. And we consider any point x, and we can consider an open interval around x with the x minus h1 and x minus h2. And when I consider an open interval that is contained in the set M, I can consider something like this. So this point is x plus say h1, and this point is x plus h2. Now x minus h1 और x plus h1 जो है वो n का तो सबसेट है, m का भी सबसेट है, लेकिन x plus h2 और x minus h2
ये n का सबसेट नहीं है, m का सबसेट है. So I told you that the two intervals that we are considering, ix, one belonging to n, and ix, the one belonging to m. Now that may be something x minus h1 less than x or t x plus h1. But for larger set, I consider x minus h2 less than t less than x plus h2. तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? h1 is the smaller. So I said that h1 is the smaller of the two, or minimum of h1 and h2, and that makes sure that इससे जो बनेगा interval x minus h1 से लेके x minus h plus h1 इस figure के हिसाब से this will be a subset of n, and also it will be a subset of m, and that means it's a subset of n intersection m. इसका मतलब है जब n नेबरहुड था x का, m भी नेबरहुड x का, तो n इंटरसेक्शन m जो है ये भी नेबरहुड है x का. I think that completes the description of that proof, and I go back to my deleted neighborhood. Now we are focusing on the idea of neighborhood that goes from a minus delta to a plus delta, but a minus delta से a plus delta सारे elements जो हैं वो open interval के members हैं. हमने इसमें से जिसका neighborhood देख रहे हैं उसको निकाल दिया, यानी a minus delta से a open set open interval और a से a plus delta open interval. तो a को निकाल देते तो हम इसको deleted point कहते हैं, deleted neighborhood कहते हैं. We'll use this at somewhere. I defined interior point last time, and interior point of a set is a point such that you consider an open interval that exists in open interval I such that x belongs to that open interval, and that open interval is entirely contained in S. S is a subset of R. तो इंटीरियर पॉइंट, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पॉइंट के गिर्द एक ओपन इंटरवल कंसीडर करें, एंड दैट मींस ऑल पॉइंट्स बिटवीन x माइनस डेल्टा टू x प्लस डेल्टा. अगर ये ओपन इंटरवल सेट का, यानी जिस सेट का ये एलिमेंट है, it is completely contained in this, then it is called an interior point. Note that that S is the neighborhood of the interior point of it. So you can say that a set is the neighborhood of each of its interior points. The set of all interior points taken together makes what we call interior of the set, and we denote it as SI. ये definition I mentioned before that हम ये definitions discuss कर चुके थे. Let us look at some Sir? examples. जी. Sir, there's someone in the waiting room who बोल Okay. बोला करते हैं. मुझे क्यों नहीं notification आ रहा? Where the waiting room has gone? Oh, now I can see it. Okay, open interval 1 2. हमने कहा था ओपन इंटरवल का हर पॉइंट जो है वो ओपन इंटरवल उसका नेबरहुड है. अब हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट है फॉर ओपन इंटरवल. फॉर एग्जांपल 1.6 लूँ तो 1.6 के गिर्द मुझे एक ओपन सेट मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा, सॉरी. 1.6 minus 0.0 and 1.6 plus 0.0, that is 1.5 to 1.7. Now this open interval I sub 1.6 is entirely contained in the set. So इस तरह मैं
कई ऐसे ओपन इंटरवल बना सकता हूँ that are contained completely in S for 1.6. But what about 1.9 or 1.999999? I just take the difference between 1.9999 and 2 and consider delta or h is smaller than that, and we will see that 1.99 के गिर्द जो ओपन इंटरवल है वो भी S का सबसेट है. So 1.9 is an interior point. 1.99999 is also an interior point. हमने ये भी डिस्कशन की थी कि हम इस सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं बता सकते. Now, what is the set of interior points of this set? Every point is an interior point. So interior of the set is the whole set, and we write it as interior of set is equal to the set. What about one in close interval 1, 2? Now close interval 1, 2, every point between 1 and 2 is an interior point. But I have repeated it here. 1 and 2 are not interior points because 1 का इंटरवल बनाओ. अगर मैं 1 का कोई इंटरवल बनाऊं, that will be 1 minus 0.1 से लेके 1 plus 0.1. Now what will be equal to, what this will be equal to? 0.9 to 1.9, 1.1, sorry. Now, is this open interval that contains 1 is a subset of the set S? No, it is not, because 1 से left पे जो points हैं, real numbers हैं, वो इस set का हिस्सा नहीं है. तो 1 भी और 2 भी, 2 का इस तरह से आप open interval बनाएंगे तो 2 point something उसके अंदर आएगा, लिहाजा वो part जो है इसका subset नहीं है. तो n points के अलावा बाकी सारे points इस set के interior points हैं, so that Si, the set of all interior points of this set, is the open interval 1, 2, which is not equal to the set itself. Again, an example of a finite set. None of the point is in this set is an interior point, क्योंकि किसी point का के अंदर किसी set के अंदर किसी भी point का आप open interval बनाएं, like 4 minus 1 and 4 plus 1, 3 to 5, and 4 के अलावा कोई एलिमेंट रियल नंबर 3 to 5 जो है वो सेट S में है ही नहीं, सिर्फ 4 है. So it is not a subset of S. So thus interior point of this set, the interior of this set, or the set of interior points of this set, it has no interior points, so null set. What about this set? It also has no interior point. For example, मैं इस set का एक element लेता हूँ 1 by n. उस 1 by n का एक open interval बनाता हूँ with delta or h 0.001, that will make this thing. Now this is not the subset of this set because it contains infinitely many real numbers which are not members of S. So चाहे 1 upon 9 लूँ या 1 upon 99999999999, somebody stop me recalling 999. Yes, as and when I stop, it becomes a number greater than 0. And I make an interval, and that interval will contain infinitely many real numbers which are not elements of this set. Hence 1 by 9 is not an interior point. In fact, none of the point of this set is an interior point. If somebody is thinking about 0, the 0 is set ka element nahi hai. So there is no interior point, so the set of interior points Si is empty again. Open set. A set is said to be open if its neighborhood, it is neighborhood of each of its points, or the set S is open if each of its points is an interior point. अब दो चीजों को कंपेयर करें. इससे पहले हमने इंटीरियर ऑफ ए सेट को डिफाइन करते हुए कहा था इंटीरियर ऑफ ए सेट इज सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सम सेट. अब हम बात कर रहे हैं ओपन सेट की और ये कह रहे हैं कि ये ऐसा सेट है कि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है. And let us see the connection between the two ideas. Which idea? A set contains what interior points?
that makes the set interior set. Now we're talking about every point of a set is an interior point. So another way of saying the same thing, कि open set कब होगा when it contains all its interior point, that for every element of the S, there will be an open interval which is completely a subset of S, and hence S is open if it's neighborhood of each of its points. That is boldened, the fact that makes a set open. S is open if it is a neighborhood of each. It is. Sir, I have a question. जी. सर क्या अगर ओपन सेट आपने जैसे ऊपर बनाया था, अगर एक ओपन सेट है 1, 2 का, तो उसमें अगर हम एंड पॉइंट्स का ओपन इंटरवल बनाना चाहें, मगर हम 1 का बनाना चाहें, तो उसमें भी वही चीजें होगी कि हम एक 1 से जो है वो लेफ्ट पे एक वैल्यू लेंगे और एक राइट पे लेंगे, तो फिर वो वैल्यू हमारे सेट में कैसे इंक्लूड होगी? You are talking about the set. यस, फॉर एग्जांपल इफ दिस बेटा इज 1 दिस and 2 सेट जो के है अंदर, सेट के एलिमेंट ही नहीं है ना, ओ अच्छा, राइट, सही सही इसलिए और इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी नहीं बता सकते और लार्जेस्ट भी नहीं बता सकते. So that is the huge difference between this set which is open interval and this set which is closed interval. Closed interval में end points जो हैं वो set के elements हैं, मगर जैसे 1 और 2 इंटीरियर पॉइंट्स इसके नहीं है, इसी तरह इसके भी नहीं है. मगर 1 और 2 चूंकि इस सेट के एलिमेंट्स ही नहीं है, लिहाजा सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो सेट के एलिमेंट्स हैं. तो SI is equal to S in that case. Here interior points are between 1 and 2. 1 is not an interior point, 2 is not an interior point like this set. मगर वो सेट के एलिमेंट नहीं थे, इसलिए in set of interior points was equal to set. In this case the set of interior points is open 1, 2 and not equal to the closed interval. Now S is an open is open, only open if it is neighborhood of each of its points. We note few important things. A set is open अगर set और उसका interior जो है बराबर हो, which is equivalent to saying that every point of the set is an interior point. That is why the set is same as the interior of the set. What is the interior of the set? The set of all interior points. Alternately, if S, the set, is same as its interior set of interior points, then S is open. यही स्टेटमेंट उन्हीं दोनों इंटरवल्स के बारे में सोचो. इस सेट का जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स है, दैट इज somebody in waiting. इस सेट का जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट है वो खुद यही है, मगर इस सेट का इंटीरियर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो है वो खुद इसके बराबर नहीं है. Now a set is open if it is equal to its interior. If a set is equal to its interior, then the set is open. So you can say that a set is open if and only if the set is same as the interior of the set. One more thing few more things we note down. A set will not be an open set if it is not a neighborhood of at least one of its points. In fact, it has to be a neighborhood of every of its point. Now, इंटीरियर पॉइंट के लिए आपको कम से कम एक ओपन इंटरवल चाहिए. मैं कहता हूँ E is an interior point. तो T minus delta T plus delta ऐसा होना चाहिए. तो वैल्यू ऑफ H ऐसी होनी चाहिए कि T minus H से T plus H कंप्लीटली सेट का सबसेट है. और अगर सेट का सबसेट है तो सेट जो है उसका नेबरहुड होगा. तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए सेट उसका नेबरहुड ना हो, तो फिर ये सेट ओपन नहीं होगा.
Set is not open if at least one of its point is non-interior point, like close interval 1 2. सेट का एक पॉइंट 1 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लिहाजा वो सेट ओपन नहीं है. Every open interval is an open set. Every point of an open interval is an interior point of an open interval. So that is a link between open intervals and open sets. Look at these examples now. And these examples are the main core idea that we are focusing on today. First of our claim is that set of real numbers is open. Complete set of real numbers. कहीं से भी कोई उठाओ, 0 ले लो, 1 billion, 0.33 ले लो, -3 trillion ले लो, कोई सा भी point ले लो set of real numbers का. Each real number is an interior point of a set R. क्यों? For every real number, you can write down an open interval containing that real number. That open interval will be subset of the set R, which is not true for set of rational numbers. Rational numbers का set open नहीं है. इसके किसी भी point का तुम कोई open interval बनाओ, तो वो open interval सिर्फ rational contain नहीं करेगा, irrational भी contain करेगा. लिहाजा वो Q का subset नहीं होगा, R का subset. So none of set of rational numbers is not open, as none of its point is an interior point. Same is true for irrational numbers. For every Q rational number that you consider, there does not exist an interval IQ which is a subset of rational numbers, because this interval will contain irrational numbers also. हम बात कर चुके, closed interval is not open because 3 and 4 are not interior points. So interior इस set का interior जो है वो open interval 3 4 है, which is not same as the given set. The null set is open in the sense. Now this is an important thing. Null set is open in the sense that it has no interior point, and none of its interior point is not in the set. Now this is a way of thinking. Null set में कोई element नहीं है. जब कोई element नहीं है तो कोई none of the points is the interior point. जब सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये सेट ऐसा है कि जिसमें इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसको हम ओपन भी कहते हैं. Any finite set is not open because there is no interior point in this. इसमें से किसी पॉइंट का कोई neighborhood consider करो, interval consider करो, and that will not be completely subset of S. Any non-empty finite set is not open for the same reason that I discussed about this. And we have considered intervals before for the set, and we saw that those intervals are not subset of S. So the set is not a neighborhood of any of its point. None of the point of the set is an interior point. So the set of interior points of this set is null set. So is the set of interior points of every finite non-empty set. Look at this set. 0, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4. If you keep on writing numbers of this type, they are going towards 1, but 1 is not an element of the set. Discrete set है, any discrete set. इसके किसी point का भी कोई interval बनाओ, so that interval will contain maybe some points of this set, but mostly set of real numbers or real numbers. For example, real numbers between 2 by 3 and 3 by 4 will be included in an open interval that you make of 3 by 4, or for that matter 9,999 divided by 10,000. इसका एक मैं ओपन इंटरवल बनाता हूँ, तो उसमें रियल नंबर शामिल होंगे जो कि सेट के एलिमेंट्स नहीं है. लिहाजा
you can say that, for example, I write down divided by 10,000 minus say point से लेके 9 divided by 10,000 प्लस 0.12345 ये मैंने ओपन इंटरवल बना दिया। अब 9,999 डिवाइडेड बाई 10,000 का ओपन इंटरवल है ये। It contains real numbers, infinitely many real numbers. So this interval cannot be a subset of this. So this set is not open. मैंने यहाँ इससे पहले बात की थी एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, और उसका हमने एक छोटा सा प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है। किताब में भी ऐसे ही प्रूफ है। आप इस प्रूफ को देखिए और समझिए। आप खुद समझे तो मुझे खुशी होगी। एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज एन इंटीरियर पॉइंट। इसका भी छोटा सा प्रूफ किया जा सकता है। आई वॉन्ट यू टू गिव अ थिंकिंग। जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगी आप और एग्जाम्पल बना सकेंगे। मैं आपको कुछ असाइनमेंट और एग्जाम्पल्स दूंगा आपके करने के लिए एट सम लेटर स्टेज। मे बी इफ आई एम एबल टू प्लान अ रिप्लेसमेंट क्लास ऑन संडे, तो संडे में आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा और आपको एक वीक का टारगेट दूंगा उसके लिए। And whatever we are discussing today will make us and possibly in the replacement class on Sunday, and we will be well prepared to conduct a quiz on Monday, inshallah. Every open set is a union of open intervals. It's an interesting result. I leave the proof as optional. Sir, जी quiz will be on coming Monday. मंडे क्यों? हमारी क्लास कब होती है? Tuesday, Thursday. हाँ तो थर्सडे रखते हैं, so that you have sufficient Oh. time. मैं तुम्हें जब असाइनमेंट दूंगा ना इंशाल्लाह संडे तक तो असाइनमेंट दे दूंगा तुम्हें। तो संडे, Okay. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये 4 दिन होंगे। तुम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होगे और उससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे तुम मुझे भेज सकते हो, मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा। So that you have sufficient time to prepare for the quiz that we'll conduct next Thursday, inshallah. Okay. और sir, topics. जी बेटा, क्विज ऑनलाइन होगा? क्विज ऑनलाइन होगा। असाइनमेंट आपको टारगेट टाइम पे LMS पे जमा कराना होगा, और ऑनलाइन क्विज जो होगा उसकी भी जो सबमिशन है उसके लिए मैं प्रेफरेंस देता हूं कि आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेजें उसको, हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन जिसकी पिक लेंगे आप, उसको कन्वर्ट करेंगे PDF फॉर्म में, और PDF फॉर्म में जो फाइल होगी उसका नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल शाहिद, और फॉलोड बाय माय ERP नंबर। तो इस नाम से आप PDF फाइल सेव करके फिर मुझे आप उसको ईमेल करेंगे, मैं आपको ईमेल बता दूंगा। वैसे माय ईमेल IBA इज mqureshi, MQUR। And sir, topics कौन कौन से होंगे? टाइमिंग्स में ही होगा? जी बेटा, यस क्विज विल बी। Sir, topics. टॉपिक्स यही जो कुछ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो आज डिस्कशन हो रही है ना, ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है। आज जो डिस्कशन हो रही है इसमें जो थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं और जो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरम्स को थोड़ा सा मैं आड़ा तिरछा कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल्स में बहुत वैरायटी हो सकती है। और जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं आज
इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो और चीजें आ रही हैं कि नहीं, ये सिर्फ ओपन सेट का होगा। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जहाँ तक आज ओके ओके जहाँ तक मैं आज जाऊंगा, ओके सर। तो किस किस्म के क्वेश्चन होंगे, आई विल डिस्कस इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन। ओके सर क्लास टाइमिंग्स में ही होगा? हाँ भाई, क्लास टाइमिंग के अलावा कहाँ से टाइम लाऊंगा मैं। असाइनमेंट आप करते रहिएगा, लेकिन क्विज क्लास टाइम में ही होगा। मैं आपको 15-20 मिनट का टाइम दे दूंगा कि आप क्विज कीजिए, और 5-10 मिनट का टाइम दे दूंगा कि आप ईमेल कीजिए। इसके ओके सर। बाद मजीद बाद में बात होगी, और मैं आपको व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा। Okay, let us look at this. The interior of a set is an open set. So let us consider S to be open set and SI be its interior. अब किसी भी सेट का, नहीं यहाँ पे हमने ओपन सेट क्यों लिख दिया? ओके, जाने दें। इसका मतलब स्टेटमेंट होना चाहिए इंटीरियर ऑफ एन ओपन सेट इज एन ओपन सेट। नहीं, सही है। आर्बिट्री सेट की बात, आर्बिट्री सेट की बात हो रही है कि जब इसका इंटीरियर लिखोगे तो दैट इंटीरियर विल बी ओपन। अच्छा, ओपन होने का मतलब है इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो बनेगा उसका हर एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। फर्ज करो कोई सेट एस है जो कि ओपन सेट है, तो एस आई बी इट्स इंटीरियर। इफ एस आई इज नल, तो ये यहाँ पे हम सही है, ओपन हमें लिखने की कतई कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ सेट, एस आई इसका इंटीरियर है। अगर इस सेट का में कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है इस सेट का, तो इसका इंटीरियर खाली होगा, एम्प्टी होगा। और एम्प्टी सेट के बारे में हम कह चुके हैं कि वो ओपन होता है। लिहाजा एक आर्बिट्ररी सेट का अगर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट नल सेट है, तो इंटीरियर इज एन ओपन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट null set is an open. अगर इंटीरियर ऑफ सम सेट इज नॉट नल, तो उसका मतलब है सेट के कुछ इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ओके, सपोज x is an interior point that belongs to SI. इसका मतलब है x का कोई ओपन इंटरवल x का बनाओ, और there must be some open interval that will be subset of SI. That will be subset of SI. Do you get this point? नहीं सर। नहीं सर। सर एक आर्बिट्रेरी सेट का इंटीरियर पॉइंट एक नल सेट किस तरह हो सकता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? सर ये वाला थ्योरम वापस से जरा समझा दें। एक मिनट, मैंने एक एग्जांपल लिख दी। ये एक सेट है, इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट है? हम कह चुके हैं फाइनाइट सेट का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं। तो दिस इज अ केस वेयर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इज नल। तो किसी भी सेट का जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है नल होने की वजह से ओपन है। लेकिन अगर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इज नॉट नल, तो कोई एक इंटीरियर पॉइंट तो होगा उसमें। अगर एक इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर है, तो वो इंटीरियर पॉइंट जो है वो सेट में मौजूद होना चाहिए एज पर डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। न सिर्फ इंटीरियर पॉइंट पे होना चाहिए, बल्कि उसके गिर्द एक इंटरवल होना चाहिए कि वो भी सेट के अंदर हो। जब वो सेट में है तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स में भी है। ओके, लेट मी ट्राई दिस अगेन। पता नहीं चलता है कि नहीं चलता ये।
Now some point x, and there is an interval now x belongs to this, and what about this? क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट है x, सेट में होगा तो SI के अंदर होगा ना सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, यस सर। ए बी में भी होगा, और ए बी के सेट ए से लेके बी तक के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उसका भी सब उसमें भी होगा ये इंटरवल. दैट इज द रीजन. Got it. So we go back to the theorem. So every point in SI is an interior point of SI, hence SI is open. So where do we start? कि भाई अगर इंटीरियर ऑफ सम आर्बिट्री सेट इज नॉट नल, तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होने की वजह से सेट के इंटीरियर सेट में होगा. इसका मतलब है एक इंटरवल होगा जो इंटीरियर के अंदर होगा. इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑफ द इंटीरियर is an interior point of the interior, hence the interior of a set is open. ये इस ऐसी सूरत हाल पे आके मैं कहता हूँ कि अब मैथमेटिक्स जो है वो शायरी बन गई. दिस इज फॉर्मल लॉजिक. such kind of proofs are discussed, the method of proofs is discussed in the study of formal logic and philosophy as well. Agar SI is an open, now the next result is SI is an open subset of S. कोई भी सेट है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं SI ओपन सेट है, और for every point in the interior there exists an interval that is a subset of the interior, but X is also an element in S. But X is also in S. So this implies every element that is in SI that is also in S. So इसका मतलब SI जो है subset है S का. So SI, the interior of a set, is an open subset of S. This is a small, brief proof. Everything is logic. And from here, I'm leaving few results that you need to prove yourself. That will be part of the assignment that I'm going to send you. जो examples और जो हमने discuss किया है आज यहाँ तक, उसकी बुनियाद पर आपको ये चीजें प्रूव कर लेनी चाहिए, और किताब में कुछ के प्रूफ्स हैं, उससे गाइड लीजिए. The interior of a set is largest open subset of the set, or interior of a set S contains every open subset of S. 11 लाइन ये लोकल की हैं, 3 ब्रोनिया की हैं, 2 अल्जीरिया की हैं, और इंडिया में भी आगे में चाइना की भी और आ रही है. मतलब सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं. आप ये क्या है सवाल है ऐसा ही है. कुछ इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड की बातें हो रही हैं क्या? अच्छा, माजरत ख्वाह. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. ये चीजें जो मैंने आपके प्रूफ के लिए छोड़ी हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट दैट आई विल अनाउंस a little later. Look at this example. We are considering a set which is defined as what? Not one interval, there are infinitely many intervals, because one for each value of n. इसका मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो -1 से 1, अगर n की वैल्यू 2 है तो इंटरवल -1/2 से 1/2, इंटरवल 1/-3 से 1/3, and so on. So you see that this set is a collection of sets, open sets. Each of these open intervals are open sets. अगर तुम इन सब का यूनियन लो, what will be the union of this all these sets? -1 to 1. Yes, -1 to 1. Get it? तो ये एग्जाम्पल है ऊपर जो हमने थ्योरम कंसीडर किए
जिसको प्रूफ छोड़ दिया, यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। यूनियन ऑफ आर्बिट्री सेट ऑफ ओपन, यानी एनी नंबर ऑफ सेट ओपन सेट्स के यूनियन लोगे दैट विल बी एन ओपन। अच्छा, ये तो सिस्टमैटिक है, देयर कैन बी नॉन सिस्टमैटिक सेट्स आल्सो। नॉन सिस्टमैटिक सेट से क्या मतलब मेरा? नॉन सिस्टमैटिक सेट से मेरा मतलब है कि मैं कहूँ कि साहब एक ये लाइन मैंने बनाई, नहीं बनी, ये लाइन मैंने बनाई विच इज रिप्रेजेंटिंग आर। अब मैंने एक ओपन सेट यहाँ लिया, एक ओपन सेट यहाँ लिया और लेता गया। फर्स्ट कीजिए ये 0 1 है, और ये कीजिए 3 4 है, और पॉइंट्स इन बिटवीन ये 5 6 है। आप कहेंगे ये भी सिस्टमेटिक हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये 2 और 2.5 इस तरह के ओपन सेट में बनाते चला जाऊँ लाइन पे, प्लेस एनी देयर, इन सब का यूनियन जो है वो भी ओपन होगा। These are open because endpoints are not included, so open intervals हैं। So 0 1 2 2.5 3 4 5 6. So I can consider a systematic set or a non-systematic set, and let me say that this does not stop here in this direction, or this does not stop in this direction. तो इस तरह के आर्बिट्री ओपन सेट्स लेता चला जाऊँ इन्फिनिटली मैनी, उन सब का यूनियन बनाऊंगा। भाई मैं अगर इन दोनों का यूनियन करूं, ये ओपन है, ये ओपन है, इनका यूनियन जो है वो ओपन होगा कि नहीं होगा? यूनियन में 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 2.5 भी नहीं होगा। लिहाजा एवरी पॉइंट ऑफ द यूनियन ऑफ दीज टू इज एन इंटीरियर पॉइंट, सो द यूनियन ऑफ दीज टू इज एन ओपन सेट। And then we move on to the next idea. Should I keep going? I don't feel that I need a break. I'm going forward without a break. Limit point of set. सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मेनली जो अभी हम प्रेजेंटेशंस और टॉपिक्स का जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो एससी मलिक वाली बुक से फॉलो कर रहे हैं ना? मलिक को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं से ट्रेंच का भी मटेरियल आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया। अच्छा, अभी नहीं आया, अभी तक सब ट्रेंच मोस्टली रेफरेंस बुक होगी। यस, ओके सर, थैंक यू। टेक्स्ट बुक इज मलिक। सर मलिक का 4th एडिशन चलेगा? तुम्हारे पास है? यस सर। हार्ड कॉपी? यस सर। अच्छा, मेरे पास कौन सा है मुझे नहीं पता, किधर पड़ी है मलिक? ये नहीं, मेरे पास सेकंड एडिशन है। 4th एडिशन वुड बी डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। 4th एडिशन इम्प्रूवमेंट के साथ होगा तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों का इजाफा हो और कुछ चीज़ों को उसने ज़रा ट्रिवियल समझ के छोड़ दिया हो। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से हार्डली कोई चीज़ मिस की होगी। एनीवेज, एडिशन डजंट मैटर। ओके, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ये भी हम डिफाइन कर चुके थे लास्ट टाइम। If a real number L is a limit point of some set S, if every neighborhood of L contains an infinite number of members of S. Alternately, L is a limit point of S if every neighborhood of neighborhood N of L and the intersection of N and set S is an infinite set. Elementary level पर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि limit point of a set is a point L for which every deleted neighborhood, यानी point L को छोड़ दीजिए, बाकी
L minus H or L plus H, leaving out L, contains at least one member of the set. और चूंकि यहाँ H arbitrary है, लिहाजा for every H, the member that we are talking about कि भाई set S का member इस interval में होगा, so there will be for different H there will be different members. In fact, H कितना छोटा या बड़ा हो, this interval will contain infinitely many members of S. लिमिट पॉइंट के सेट अगर बनाएं किसी भी सेट का, एक सेट है उसके कई लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, तो उस सेट को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं एंड इट्स नोटेशन इज एस प्राइम. अच्छा जी, लेट अस ट्राई टू absorb the idea using these examples. मैंने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स जो हैं कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इस फार्मूले से, फिर n इज अ नेचुरल नंबर. इसका मतलब है मेरे पास एलिमेंट्स होंगे 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, and so on and so forth. 101 upon 100, 1001 upon 1000, 1,000,001 upon 1,000,000, and so on. And we see that point 1 is the limit point. 1 is not a member of this set. मगर 1 का जब भी तुम डिलीटेड नेबरहुड कंसीडर करोगे, यानी 1 को छोड़ दो, 1 minus delta, 1 plus delta. So open interval 1 minus H and 1 plus H. Okay, I give numbers to H. 1 minus 0.01 and 1 plus 0.01. What does this interval means? It means what? 0.99 to 1.01. Now, this set contains infinitely many members of this set in the left half of the interval. तो असल में चूंकि आपने डिलीटेड नेबरहुड लिया है, तो दरअसल हमारे जो डिलीटेड नेबरहुड है, that is from 0.99 to 0, 0 not included, union 0 to 1.01. तो बाय कंस्ट्रक्शन ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स इस इंटरवल में तो हैं, इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में कितने हैं? दिस इज 99 upon 100. 99 upon 100 का मतलब है इस पूरे इंटरवल के बाहर सिर्फ कौन सा है? 99/100 इस इंटरवल में नहीं है, 98/99 इस इंटरवल में नहीं है, यानी पहले तकरीबन 100 एलिमेंट्स इस इंटरवल में नहीं है, बाकी सारे इसमें हैं. And that makes K 1 is the limit point because every neighborhood of 1 contains infinitely many members of the set. यहाँ हम members of the set की बात कर रहे हैं. Interior point में हम कह रहे थे elements in the neighborhood is a subset of the set. अब यहाँ neighborhood subset of set नहीं कह रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि deleted neighborhood contains infinitely many members of set. It may contain others that are there in the interior point neighborhood. मगर हमें उसकी फिक्र नहीं, हमें फिक्र इस बात की कि इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं. Only a finite number of elements should be outside or infinitely many. Infinitely many members should be inside. ये वैसे मैंने टेक्निकली बात सही नहीं कही कि आउटसाइड जो है फाइनाइट हो. इस पर्टिकुलर केस में आउटसाइड फाइनाइट है, इनसाइड इन्फिनिट है, बिकॉज किसी भी सेट के एक नहीं कई लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं. क्योंकि इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट है, तो डिराइव्ड सेट यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट इज ओनली दिस पॉइंट. ओके, फ्रॉम 0 to 1 every real number which is a rational number. 0 से 1 every real number which is a rational number. For this set, not only every rational number between 0 and 1 is the limit point of this set, but every irrational numbers, यानी इस 0 से 1 के दरमियान किसी भी पॉइंट का नेबरहुड लो, जाहिर है कि हमने तो फिर वक्त रैशनल नंबर्स लिए हैं ना,
तो रैशनल नंबर्स को कंसीडर करो, इसका कोई भी छोटा सा नेबरहुड बनाओ, इसमें इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स। लिहाजा सेट के इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होने की वजह से हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है। सिर्फ रैशनल नंबर्स ही लिमिट पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इरेशनल नंबर्स भी लिमिट पॉइंट्स हैं। क्योंकि लिमिट पॉइंट्स में दोनों रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स शामिल हैं, और 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट्स हैं, क्योंकि 0 का कोई भी नेबरहुड या इंटरवल, ओपन इंटरवल कंसीडर करोगे, राइट साइड पार्ट विल कंटेन इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स ऑफ दिस सेट, इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स। 1 का कोई नेबरहुड कंसीडर करोगे, 1 माइनस डेल्टा के अंदर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। लिहाजा डिराइव्ड सेट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट is a limit point of this set. Every irrational numbers lying between 0 1 is a limit point of this set. 0 and 1 are also limit point of this set. इसका मतलब है 0 से लेके 1 तक सारे के सारे real numbers जो हैं इसके limit points हैं, and here we have a set जिसका derived set यानी set of limit points is in a way larger than the original set. Here the derived set was smaller. Here derived set is large. This is an interesting example. What we are taking? We are making elements of set from what? Reciprocals of natural numbers. Now, this set contains all elements of the type 1 upon natural number plus 1 upon natural number. Now, what natural number? Any natural number. इसका मतलब है ये सेट जो है मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ एज ए यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट। देखो m और n दोनों की वैल्यू 1 1 ले लूँ तो पहला एलिमेंट 1 प्लस 1। अब m को तो 1 रखूँ, n को 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 plus 1 1 plus half 1 plus 1 by 3 1 plus 1 by 4 so on 1 plus 1 by n। एक सबसेट का ये बन गया। दूसरे में पहला m जो है वो 2 को फिक्स कर दूं और n को वेरी करूं, so 1 upon 2 plus 1 1 upon 2 plus half 1 plus 1 upon 2 plus 1 by 3 and so on। फिर m को 3 फिक्स कर दूं और n को वेरी करूं, so 1 upon 3 plus 1 1 upon 3 plus 1 by 2 1 upon 3 plus 1 by 3 and so on। And in this way keep on doing up to arbitrary value of m, and n varies from 1 2 3 so on। Now this set is a union of all these sets। Should I stop here? No, I should not, because natural numbers to infinite तक जा रहे हैं, लिहाजा ये infinite collection of such sets है। Look at the limit of this set। Limit, what is the limit point of this set? When n is very very large, s1, so this part 1 by n will become very very small, so its limit point is 1. It would be 1. What about this set? The limit point is half. For this limit point is 1 by 3. For this limit point is 1 by 4. For this limit point is 1 by n, m, because इस सेट में मैंने m फिक्स किया हुआ है, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। अबे यार, so this will keep on going। तो अब जो वो लार्जर सेट था जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या बन रहा है? 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 so on। All reciprocals of natural numbers are limit points of this set, infinitely many limit points of this set। And then we come to a very important and a fundamental theorem of what we call analysis or real analysis or complex analysis, just analysis, Bolzano-Weierstrass theorem।
We have modifications of the theorem for different sets. Here we are talking about subsets of set of real numbers because हमारे इस कोर्स में जो यूनिवर्स है जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है. We are talking about functions of real valued functions of real numbers. So R is mapped into R. So हमारा fundamental set जो है वो R है. Bolzano-Weierstrass theorem for subset of R. Now, what's this statement? Let me make it large, bold. Every infinite bounded set has at least one limit point. Every infinite bounded set has at least one limit point. तो बहुत टाइम लगा देंगे. क्लियर ऑल कर देंगे सर. हाँ, क्लियर ऑल है. जूम बोर्ड पे तो होता है सर. जी, ये जूम बोर्ड नहीं है. हाँ, लो अब ड्रॉर की वही है. लो ये तो कुछ और आ गया. नहीं, गड़बड़ हो गई. Suppose this is our set of real numbers. Bounded set का क्या मतलब है? Bounded set का मतलब है all elements lying between two numbers, finite numbers, small n and capital N. Infinite set का मतलब क्या है? कि elements of the set are infinitely many and they are all lying between m and small n and capital N. अच्छा, मैं उसके फॉर्मल प्रूफ में जाने से पहले एक चीज आपसे पूछूं. मैं यहाँ पे मिड पॉइंट ले लूं, या तो दोनों साइड पे इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स होंगे या एक साइड पे फाइनाइट होंगे, एक साइड पे इन्फिनिट होंगे. Isn't it? You have to respond to this discussion. Bounded set का मतलब है मेरे पास एक ऐसा सेट S है, subset of R, all elements are between two finite numbers, और ये सेट इन्फिनिट है. मैं इसके मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ. सेट में अगर इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स हैं या तो दोनों साइड पर होंगे या किसी एक साइड पर होंगे इन्फिनिटली मैनी. Isn't it? हेलो सर दोनों साइड पे होंगे. कोई जरूरी है? चलो मान लिया दोनों साइड पे होंगे तो यहाँ तो होंगे ना. अब इसका मिड पॉइंट ले लो, या तो दोनों साइड पे इन्फिनिट होंगे या किसी एक साइड पे होंगे. तुम्हारी मानी थी, अब मेरी मान लो कि इधर फाइनाइट है इधर इन्फिनिट है. इसका मिड पॉइंट ले लो. अब दोनों तरफ इन्फिनिट हो सकते हैं या किसी एक तरफ होंगे. फिर मेरी मान लो इधर फाइनाइट है इधर इन्फिनिट है. किधर बोल रहे हैं आप? गौर करो दोबारा. लेट मी स्टार्ट अगेन. कर्सर नजर नहीं आ रहा. कर्सर नजर नहीं आ रहा? हाँ, नहीं हिल रहा सर कर्सर. अच्छा, एक जगह पे ही है. आप तो लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, नजर आ रही हैं. किधर बोल रहे हैं? स्मॉल एम और कैपिटल एम नजर आया? सर जब आप बोल रहे हैं ना कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे आप बोल रहे हैं. अच्छा, ये मिड पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा. आ रहा है सर. अब नजर आ रहा है. ये मिड पॉइंट को और बड़ा कर दिया. अब मुझे ये बताओ, सेट इन्फिनिट है
तो इसके इन्फिनिट मेंबर्स इस मिड पॉइंट के लेफ्ट पे होंगे, राइट पे होंगे। आपके एक दोस्त ने कहा दोनों तरफ, दोनों साइड पे हो सकते हैं। अब कोई एक साइड ले लीजिए, उसका मिड पॉइंट बनाइए। अब बताइए जो दूसरा मिड पॉइंट बनाया है राइट साइड पे, इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स दोनों साइड पे हो सकते हैं या किसी एक साइड पे हो सकते हैं। मैंने कहा कि भाई किसी एक साइड पे अज्यूम कर लो, दूसरे साइड पे फाइनाइट हो। तो जिस साइड पे मैंने अज्यूम किया इन्फिनिट है, उसका आधा कर दो। दूसरी साइड में फाइनाइट कैसे होंगे अगर ओपन अज्यूम कर लो। इन भाई देखो आर्बिट्री इन्फिनिट सेट लिया है ना मैंने, तो हर दफा जब मैं मिड पॉइंट इन्फिनिट मेंबर्स होंगे। मैंने कहा पूरा सेट जो है बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 7 के दरमियान सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर मैं 1 से 7 का जो इंटरवल है उसको आधा कर दूं, तो या तो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट दोनों साइड्स पे होंगे या किसी एक साइड पे होंगे। जिस साइड पर भी तुम समझते हो कि वहां इन्फिनिट सेट होंगे उसको आधा कर दो। अब जो चौथाई हिस्सा रह गया 2, अगर इनके भी दोनों साइड पे इन्फिनिट है तो मैं तफरीह तबाह के लिए कहा जस्ट फॉर अ चेंज कि अब जो मेरे पास 2 आधे इंटरवल्स हैं, इनमें से एक में फाइनाइट है और दूसरे में इन्फिनिट है। दूसरे में एक में अगर फाइनाइट अज्यूम कर लूं तो दूसरे में इन्फिनिट होना जरूरी है, इसलिए कि मैंने पूरे सेट को इन्फिनिट कंसीडर किया है। इस प्रोसेस से जैसे ही मैं हाफ हाफ और हाफ और हाफ और हाफ करता चला जाऊंगा, तो हर अगले 2 हाफ्स जो हैं उनमें से इन्फिनिट या तो दोनों में होंगे या किसी एक में जरूरी होंगे। दैट इज द लॉजिक। और इनडेफिनेटली अगर ये प्रोसेस करते चले जाएं तो एक पॉइंट हमें मिलेगा जिसके इर्द गिर्द इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसका मतलब वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट लिमिट पॉइंट उस वक्त होगा जब उसके किसी भी डिलीटेड नेबरहुड में सेट के इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हों। With this geometrical description, let me go back to the mathematical description. हमने कहा let S be bounded an infinite subset of R. Thus there exists a real number which is infimum and another real number which is supremum, such that every element of the set lie between small n and capital M. मैंने आपको ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन जो दिखाई थी वो इसलिए दिखाई थी कि जो प्रूफ है इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल की गई है, और वो ट्रिक क्या है कि हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं P, जिसके एलिमेंट क्या हैं, इसके एलिमेंट दे एक्सीड ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। इसका मतलब हुआ कि दिस सेट इज नॉट एम्प्टी। क्योंकि सेट के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इन्फिमम से बड़े होंगे, और इन x एक्सीड अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, तो S के एलिमेंट्स में M शामिल है, लिहाजा M इस सेट में होगा, और M से कुछ बड़े और एलिमेंट्स भी इस सेट में होंगे। और हम ये कह रहे हैं कि ये सेट P जो है उन तमाम सेट्स से बन रहा है, उन तमाम एलिमेंट से बन रहा है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। अब ये एक एजम्पशन जो है मैथमेटिकली बड़ी स्ट्रांग है मगर जनरलाइज है, और ये वही है कि जो मैं आपसे कह रहा था कि किसी एक पार्ट पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दूसरे में इन्फिनिट होंगे। दोनों में इन्फिनिट हो तो मैं उसकी बुनियाद पर ये इस प्रूफ इस तरह से डेवलप नहीं कर सकता जैसे यहाँ करता हूँ। ये अज्यूम करके फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स जो है लाइन पे बनाऊंगा तो 0 से 1 तक के दरमियान होंगे। 0 का करीब ज़्यादा है और 1 के करीब कम है। तो एक साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनका मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सेट ऐसा है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
बाकी सारे इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है, इस सेट के बाहर है. दिस सेट इज नॉट एम्प्टी. ऑल्सो दिस सेट इज बाउंडेड अबव, क्योंकि वो तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो m से बड़े हैं और कैपिटल M से डेफिनेटली छोटे ही हैं, क्योंकि p का हर एलिमेंट इसी सेट में से लिया जा रहा है. So also this set is bounded above, so that p is a bounded set and must have a supremum. ये कहाँ से आ गया भाई? Completeness property of set of real numbers. अगर एक सेट बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम जरूर होगा. Let us say that supremum is alpha. इसका मतलब है सेट P में कौन से एलिमेंट्स हैं? A finite number of elements that are greater than or equal to the infimum of the original set and supremum of the set P. So all finite numbers members of the set are between small m and alpha. So here we have demonstrated using a figure. पूरा सेट जो है वो infimum small m और supremum, हमने जो सेट बनाया है वो small m से alpha तक है. Now by construction alpha exceeds on alpha बड़ा है किससे? Only a finite number of elements of the set S, which we have called P. Now by construction alpha exceeds only a finite number of elements of S, so does A minus alpha minus H. अगर A जो है वो only finite number of elements से बड़ा है तो alpha minus H या A minus H जो है वो भी finite number of elements से बड़ा है. Thus there are elements of P that lie between alpha minus H and alpha. However, no element of P can be between alpha to alpha plus H. अच्छा साहब, क्योंकि हमारा P बाय डेफिनेशन जो है वो अल्फा तक है, इससे आगे नहीं है. तो अल्फा और अल्फा प्लस H के दरमियान सेट P का कोई मेंबर नहीं होगा. Therefore, alpha to alpha plus H contain how many elements of the set S, larger set? हमारा हमारा assumption ये था कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक आर्बिट्री नंबर तक मौजूद हैं, उसके आगे इन्फिनिट है. तो A से अल्फा प्लस H जो है that will contain infinitely many elements of S. Otherwise, अगर ऐसा नहीं है, अगर फाइनाइट ही है तो अल्फा प्लस H भी P के अंदर आ जाएगा. लिहाजा to avoid breaking alpha plus H including into P, alpha से alpha plus H are logically containing infinitely many elements of S. Hence, alpha minus H to alpha plus H contains infinitely many elements of S. Thus, alpha is the limit point of S. मेरी उस ज्योमेट्रिकल जो लॉजिक थी उसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है. आप कहेंगे कि आपने नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट पार्ट में ही क्यों लिए, इस साइड पे क्यों लिए आप ये सेट पी? तो भाई मैं सेट पी इस तरफ से भी ले लेता, इस तरफ भी ले सकता था और कहता कि x does not exceed instead of exceeds only a finite number. तो मैं दूसरी तरफ से भी बात कर सकता था कि इस साइड पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इधर इनफिनिट आ जाते. So, assuming that this part contains finite number of elements leads to the fact that the other part must contain the rest of the infinite elements. In fact, मैंने जब ये कह दिया कि all elements are less than some number, all finite number of elements are less than some number. इसका रीजन, इसकी लॉजिकल जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स आर ऑन द अदर साइड. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कह लूँ कि only a finite number of elements are close to the supremum of the set, then infinitely many will be close to the or in the region from this point here to small m. और जहाँ पे मैं नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स पैथ को खत्म करूँगा उसके बाद से इन्फिनिटली मैनी members आ जाएंगे. This is a typical theorem in pure mathematics, and I proceed further with these two interesting results कि अगर S और T subset of real numbers हैं, where S is a subset of T, then the derived set, यानी set of limit points of set S should be a subset of limit points of
set T. If I take the union of the two sets, so union का जो set of limit points होगा, that will be union of the set of the limit points of the two sets. I hope you can go through the proof and try to understand them and absorb. सर इसमें जी कहिए सर वो लास्ट तो जानो थ्योरम 2 जो है वो एस यूनियन टी का होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं है. This notation is just introduced as the set of derived set of the given set, meaning set of all limit points. ओके ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्स में तो चीजें उलट जाती हैं यार यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं उलट रही है. ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है. तो जरा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की अगर आप डेफिनेशन समझ में आ गई हो आपको, तो आप इंशाल्लाह ये प्रूफ भी समझ लेंगे. So I'm leaving this as an exercise for you in order that you self-evaluate whether you have understood the definitions or the concept introduced up to now. We move on to the next part of the chapter. Here our main idea is to discuss closed sets, जबकि पिछले आर्टिकल जो था उसके अंदर हमने ओपन सेट्स किए थे. और this whole chapter is about special sets or special subsets of set of real numbers. Closed set and closure of a set. इससे पहले हमने डिस्कस किया ओपन सेट, इंटीरियर of a set, derived set, limit point and derived set. यहाँ हम closed set से the concept build up करेंगे, for which we develop the tools with definition 2.1 for adherent point. A real number alpha is said to be an adherent point of some set S if every neighborhood of alpha contains at least one point of S. Let me try this whiteboard again. Okay, I am trying to talk about adherent point. And I consider this finite set. 1, 2, 3, 4. This is a finite set. मेरे adherent point की definition ये कहती है कि set का कोई point consider कीजिए और consider an open interval containing say 4. Now this open interval contains any element of this set or not? 4 के अराउंड जो मैंने इंटरवल बनाया है, इस इंटरवल में सेट S जो यहाँ लिखा है 1 2 3, इसका कोई एलिमेंट है? एक एलिमेंट है. एक एलिमेंट है. दैट्स इट. डेफिनेशन सिर्फ ये क्लेम कर रही है कि एक एलिमेंट हो. इसका मतलब है इस फाइनाइट सेट का भी एडहेरेंट पॉइंट है. So coming back to the definition, if every neighborhood of alpha contains at least one point, so भाई एक point तो था ना set का. So we are opening our gate for extension of ideas. Note that an adherent point of S may or may not be an element of the set S. It may or may not be a limit point of the set S. It may and may not be an interior point of the set. मैंने सिर्फ एक example discuss की है, and we will come to more examples little later. Every element of the set is an adherent point of S, as every neighborhood of each of its point contains the point itself. और इसी के example मैंने आपको दी.
जिसकी वजह से वो पॉइंट जो डिस्क्रीटली या फाइनाइट सेट में या डिस्क्रीटली किसी सेट में मौजूद हैं, उनको तो अभी तक हमने लिफ्ट ही नहीं लगाई किसी कॉन्सेप्ट के जरिए, और इस कॉन्सेप्ट के जरिए अब हम वी आर टेकिंग देम टुगेदर इन अवर theory. So moreover, any finite or infinite set, all of its points as well as its limit points are adherent points of the set. क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है, लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि उसके हर नेबरहुड में सेट का कम से कम एक एलिमेंट या इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स हों। तो एडहेरेंट पॉइंट तो कह रहा है कि सेट का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तो लिमिट पॉइंट भी एडहेरेंट पॉइंट है। In fact, every element of a finite set is an adherent point of the set. Every element of this discrete set is an adherent point. An additional adherent point of this set is 0. 0 is not an element of this set, but 0 is the limit point of this set. But क्योंकि ये adherent point definition को भी satisfy कर रहा है, लिहाजा 0 जो है वो adherent point है. However, every other element is an adherent point of this set, but not a limit point. तो इस सेट की क्या खसूसियात हैं? हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, 0 भी एडहेरेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। बाकी कोई एलिमेंट, 0 इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन इस सेट का कोई एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सर 0 वाली क्या बात बोली अभी आपने, एडहेरेंट पॉइंट 0 वाली 0 बात? इस सेट में है नहीं, लेकिन 0 एडहेरेंट पॉइंट है, क्योंकि 0 का मैं कोई भी नेबरहुड लूंगा तो उसमें इस सेट के एलिमेंट्स आएंगे ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो 0 लिमिट पॉइंट भी है, एडहेरेंट पॉइंट भी है, लेकिन इस सेट का मेंबर नहीं है। मगर इस सेट के तमाम मेंबर्स जो हैं इसके एडहेरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। जितनी तेजी से मैं जुमला बोल रहा हूँ उतनी तेजी से सोचना जब तुम शुरू करोगे तब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, वरना तुम्हारे सोचने का अमल भी रुक रुक के होगा। जब सोचने का अमल रुक रुक के होता है तो बोलने के लिए अल्फाज मुंह से रुक रुक के निकलते हैं। हम जब कभी किसी सवाल करते हैं और अगला जवाब देता है अटक अटक के, तो उसकी यही वजह होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो बेसिक आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं की। तो ये जो तुम सवाल करते हो बीच में, मैं कभी नहीं रोकता, इसलिए कि तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है ना उसको मैंने मैच्योर करना है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ फौरन जवाब दूं, भले से टाइम ज़्यादा लग जाए। So what's the special thing about this example? Every element of this set is an adherent point because that satisfies the definition of adherent point. 0 is an additional adherent point because 0 also satisfies this condition. Then 0 is a limit part of this set as well as adherent point of this set, although it is not an element of this set. Whereas every element of this set is an adherent point of this set, but not a limit point of this set. Every limit point of any set is an adherent point of the set. Here is one term which is not in Malik second edition. I don't have the fourth edition so that I can confirm the boundary point उसने consider किया या नहीं किया, isolated point उसने consider किया या नहीं किया, मगर boundary point and isolated point तो हमें trench में मिलेंगे। The ideas are simple. A real number beta is said to be a boundary point of a set if every neighborhood of beta contains both points of S as well as points not in S. So what I'm trying to make room for, I'm trying to make room for giving some weight to these endpoints 1 and 4. ये क्लोज इंटरवल है, हमें पता है कि इस क्लोज इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स में 1 और 4 दोनों शामिल हैं। लिमिट पॉइंट होने की वजह से 1 के का कोई भी नेबरहुड लो, उसके राइट साइड के एलिमेंट्स इस सेट के इन्फिनिटी मैनी एलिमेंट्स होंगे। मगर अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि 1 जो है वो बाउंड्री पॉइंट है, क्योंकि इसके हर नेबरहुड में 1 का कोई भी नेबरहुड बनाओ
तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो सेट के अंदर है और ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो सेट के बाहर है। अब बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि एवरी नेबरहुड बीटा का ऐसा होगा जिसमें सेट के एलिमेंट्स होंगे और सेट के वो भी एलिमेंट्स होंगे जो सेट के नहीं है। दैट collection of all these points is a boundary point. So this closed interval AB, the endpoints A and B are now boundary points of the closed interval. Isolated point. Any set, any element of a set S, मैंने उस element का नाम small s कर दिया, एक isolated point होगा if there exists an open interval of this point small s that contains only one point of S, which is S itself. Okay, let me give you an example. Now, zero, ये set है बनाया मैंने semi open interval union and a set containing only one point union open interval 9 and 13. सबसे पहले तो मुझे बताइए, do you see any boundary point of this set? Okay, let me ask. हाँ बोलो, जीरो इसके बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं? नहीं है। जीरो के नेबरहुड में सेट के एलिमेंट्स और वो भी एलिमेंट्स हैं कि नहीं जो सेट में नहीं है? जीरो के हर नेबरहुड में सेट के भी एलिमेंट्स हैं और वो भी हैं जो सेट में नहीं है। जीरो माइनस डेल्टा, जीरो प्लस डेल्टा, जीरो माइनस डेल्टा सेट में नहीं है, जीरो प्लस डेल्टा सेट में है। तो जीरो बाउंड्री पॉइंट हुआ कि नहीं? सेट में तो इंक्लूडेड नहीं है ना जीरो। जीरो बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं? मैंने ये नहीं पूछा कि सेट में है कि नहीं। जीरो सेट में नहीं है, मगर जीरो का तुम्हें हर नेबरहुड ऐसा मिलेगा। लेट मी राइट डाउन, जीरो माइनस 0.1 comma 0 plus 0.1, ये जीरो का नेबरहुड है। इज दिस इंटरवल नेबरहुड ऑफ जीरो? यस सर। इसमें इस सेट के एलिमेंट्स हैं? यस, फ्रॉम 0 to 0.1 इस सेट के एलिमेंट्स हैं। क्या इस इंटरवल में वो एलिमेंट्स भी हैं जो सेट के एलिमेंट नहीं है? जी सर। तो जीरो बाउंड्री पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ। हाँ, फोर बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं? है। थ्री बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं? नहीं है सर। अच्छा, 9 बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं? है। 13 बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं? है। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट अगेन। जीरो इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं? इंटीरियर नहीं है सर। इंटीरियर नहीं है, गुड। 4 इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। अब मैं इंटीरियर पॉइंट्स का सेट लिखना शुरू कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने इंडिकेट किया मुझे कि जीरो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, फोर इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो सॉरी, ये मैंने जो सुपर स्क्रिप्ट डाल दिया, गलत डाल दिया। इसका सुपर स्क्रिप्ट आना चाहिए आई, चलो इंटीरियर पॉइंट्स। अच्छा, गोइंग बैक, आपने कहा जीरो इसका एंट्री पॉइंट नहीं है, फोर इसका एंट्री पॉइंट नहीं है। एनी पॉइंट बिटवीन 0 and 4 is an interior point of this set or not? It is.
यस सर। ओके 9 इसका एंट्री पॉइंट है। No. 13 No. 13 भी नहीं, लिहाजा all points between 9. What about 9.1? है Is Yes. 9.000001? है Yes. 12.99999? यस So Yes, sir. set of interior points complete हो गया। आप कहेंगे बीच में जो मैंने 5 जोड़ा हुआ है इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं बात कर रहा है इसके बारे में? ना मैंने बाउंड्री के तौर पे कंसीडर किया इसको, ना मैंने इंटीरियर पॉइंट के तौर पे कंसीडर किया। अच्छा सर इसलिए एक पॉइंट है इसलिए, जी, एक पॉइंट है इसलिए। दिस इज एन सर आइसोलेटेड पॉइंट। इसका नेबरहुड सेट का हिस्सा नहीं है इसलिए। इसके नेबरहुड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है सेट का और वो है 5। So what is an isolated point? It's a point जिसका इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट नहीं हो। इसलिए कि मैंने डिस्कशन इसी डायरेक्शन में की थी, है ना? नहीं, द पॉइंट इज दैट कि आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होगा कि उसका कोई भी नेबरहुड बनाओ, उसमें सेट का सिर्फ वही एक एलिमेंट होगा और कोई नहीं होगा। तो जब तुम इसको लाइन पे ड्रॉ करोगे तो ये तो इंटरवल की तरह बनेगा, ये भी इंटरवल की तरह बनेगा, मगर ये एक पॉइंट काला कर दोगे तुम कि भाई ये एक का पॉइंट है। तो 4 के बाद गैप है, 9 से पहले गैप है, ये एक आइसोलेटेड पॉइंट है। इसको खुद पेपर पे बना के देख लो, मैं नहीं बना रहा। हाँ, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स तो ये आ गए। अच्छा, ये बताओ 0 इसका लिमिट पॉइंट है? नहीं 0 सर। इंटीरियर पॉइंट नहीं था, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 का कोई भी डिलीटेड नेबरहुड कंसीडर करोगे तो उसमें सेट के इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट्स होंगे, लिहाजा 0 इसका इंटीरियर limit point है। All elements from 0 to 4 are limit points. 4 is also a limit point because 4 के neighborhood में भी set के infinitely many points हैं। तो अब मैं derived set लिखना शुरू कर रहा हूँ, S prime। derived set जो है उसमें अब 0 शामिल हो गया, 4 शामिल हो गया, union 9 is a limit point of this set, तो 9 शामिल हो गया, 13 is also a limit point of this set। We note that isolated point, अभी आपके साथी ने मेरी सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन पे कहा था कि आइसोलेटेड पॉइंट वो है जो ना इंटीरियर पॉइंट है, ना लिमिट पॉइंट है, ना बाउंड्री पॉइंट है। ओके, बाउंड्री पॉइंट कहता है कि सेट के एलिमेंट्स हों भी और ना भी हों। तो 0 बाउंड्री पॉइंट है, 4 बाउंड्री पॉइंट है। just let me list down boundary as a set। बाउंड्री एज ए सेट क्या होगा? 0 इसका बाउंड्री पॉइंट है, 4 इसका बाउंड्री पॉइंट है, क्या 5 इसका बाउंड्री पॉइंट है? बाउंड्री पॉइंट रिक्वायर्स कि उसके नेबरहुड में सेट के पॉइंट्स भी हों और वो भी पॉइंट्स हों जो सेट में नहीं है। तो 5 does not qualify as a boundary point, 9 qualifies as a boundary point, 13 qualifies as a boundary point. So this is the boundary of this set. तो अब आप देख लीजिए कि हमारे पास इतने सारे कॉन्सेप्ट जमा हो चुके हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक अबाउट। adherent points, let us think about adherent points। Look back at the definition of adherent point। A point is adherent point if every neighborhood of the point contain at least one point of the set।
अब मुझे बताओ 5 को मैंने अभी कहा था आइसोलेटेड पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशन, दिस डेफिनेशन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, मगर 5 एक एडहेरेंट पॉइंट भी है, क्योंकि 5 का कोई भी नेबरहुड लो, 5 के हर नेबरहुड में 5 को शामिल होगा. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन adherent point, 5 qualifies as two with two qualities, of an isolated point and an adherent point. So, what are the adherent points? Now I'm writing. And बता दें कि 5 कैसे एडहेरेंट पॉइंट होगा. 5 definition देखो. A point is adherent point अगर हर नेबरहुड में सेट का कम से कम एक एलिमेंट हो, चाहे वो खुद ही हो. We have just discussed it. लिहाजा 5 के हर नेबरहुड में सेट का एक पॉइंट है और वो खुद ही है. तो adherent point of the set क्या बनेगा? 0 भी adherent point है, 4 भी adherent point है. So 0 is an adherent point, 4 is an adherent point, every point in between is an adherent point. Union, the point 5 is an adherent point. Union, 9 is an adherent point. 13 is an adherent point. Is there any problem? I hope not. So we started with a set. We talked about its interior points and write down the interior of the set. We talk about the limit points of the set and limit point का जो collection है जिसको हमने derived set का वो लिखा. We talk about the boundary points and then I made the set, which is the set of boundary points. We talked about adherent point here and we see the set of adherent points, and all these 4 things related to the set are different. With this example, we have tried to revise, repeat, revisit the ideas that we have learned up to now. Definition 2.14, the set of all adherent points, ये जो last में लिखा है मैंने. Set of all adherent points of a set S is called closure of the set. And we denote it by S के सर पे tilde, which is the union of the elements of the set and the derived set. So these are the elements of the set, and the set of its limit points is given by this. So in इस set का union हमने इसके साथ लिया, तो closure बना. And we note an interesting thing, that closure is different from all these things. The closure of the set is what? The set itself and its union with its derived set. Here is the derived set. So इन दोनों की union में क्या आएगा? Set of adherent point आएगा. So it is in fact set of adherent point. So the closure of a set is the collection of all its points and the limit point. A set is said to be closed. Now this is an important, very important idea. A set is said to be closed if each of its limit points is a member of the set S. In other words, every subset of R is closed if the set is equal to its closure. Remember this thing. If each of its limit points is a member of the set. That's the core idea.
ओह, इट इज 4:50। क्या मेरी घड़ी सही है? Yes, जी sir. सर। So I've been talking for 110 minutes. That is हाँ too सर। much. Yes, sir. हाँ, Yes, that is sir. too much, भाई। बहुत हो गया। अब संडे को मुलाकात होगी। जी Send your queries through your WhatsApp groups, and you will have lots of queries. And assignment इंशाल्लाह मैं एक दो रोज में अपलोड कर दूंगा। एंड क्विज के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस, क्विज नेक्स्ट थर्सडे है और उसके बारे में भी आपको इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा या एलएमएस पे दे दूंगा ना। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट क्लास फॉर द होल समर एंड दिस सेमेस्टर दैट आई हैव कंडक्टेड। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको लोगों को आज रिकॉर्ड बहुत नहीं करा सर परेशान, आप? रिकॉर्डिंग अभी बंद नहीं की मैंने अभी। नहीं, हाँ आपने अपना रिकॉर्ड छोड़ दिया सर। हाँ अपना नहीं, मैं इस सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हैव गिवन लेक्चर्स मच लॉन्गर देन दिस, लेकिन इस बुढ़ापे में यार 110 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना, मेरी दुआ करना। स्टॉप।